Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, today our topic is mechanism of hormone action, in which we will study how a particular hormone affects its target cell and bring biochemical changes in it to give response to a particular stimulus in order to maintain the process of homeostasis. Endocrine gland directly secrete hormone into the extracellular environment, from where these hormone then diffuses into the bloodstream by the help of blood capillaries, and the blood transported them to the target cells. In this way, hormones are allowed to affect tissues and organs far from the site of production or to apply systemic effect to the whole body. So, hormone modified the biochemical activity of target cells or tissue. This diagram indicates the secretion of particular hormone from endocrine gland and its transport up to the target cell by the help of blood. The endocrine gland secreted this particular hormone into the extracellular environment. From this extracellular environment, this hormone diffuses into the blood and the blood transported it to the particular target cell. In this diagram, a cell is indicated by green color. This is non-target cell for this specific hormone, as it do not contain receptor for it. Or in other words, we can say that this cell contains wrong receptor. Wrong receptor means this cell contains receptor for some other hormone but not for this particular one. While another cell is indicated by blue color. This is the target cell for this particular hormone, as it contains receptor for it. So this hormone binds with receptor of such cell in order to form the hormone receptor complex, which bring further biochemical changes in the target cell. Before going to study the mechanism of hormone action in detail, we will see what are hormone receptors. Hormone receptors are special proteins found on target cells to which the hormone bind in order to form the hormone receptor complex. अब हमारे पास क्या है, हार्मोन रिसेप्टर क्या चीज है? ये ऐसे स्पेशल प्रोटीन है जो टारगेट सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, जिसके साथ वो स्पेसिफिक हार्मोन बाउंड हो जाता है और हार्मोनल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाता है, और वो हार्मोनल रिसेप्टर कम्प्लेक्स फर्दर उस टारगेट सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस लाता है ताकि एक स्पेसिफिक जो स्टिमुलस है उसको वो सेल रिस्पॉन्स दे सके. टाइप्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स. Based on their location, hormone receptors are divided into two types, that is external receptors and internal receptor. The first ones are external receptors. External receptors are transmembrane receptors which are embedded in the lipid bilayer of the cell membrane, and such receptors are for the protein or amine hormone. यानी एक्सटर्नल रिसेप्टर हमारे पास ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर के अंदर पाए जाते हैं, और ऐसे जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं वो प्रोटीन और अमाइन नेचर के हार्मोन के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्सेट्रा, बिकॉज दीज हार्मोन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर and cannot cross the plasma membrane lipid bilayer. That is why their receptors are found on the plasma membrane of the target cell. The second one are internal receptors. They are either nuclear or cytoplasmic. The nuclear receptors are found on the nuclear membrane, while cytoplasmic receptors are found in the cytoplasm of cell. And these receptors are for the steroids hormone. अब हमारे पास इंटरनल रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और ऐसे रिसेप्टर हमेशा स्टेरॉइड्स हार्मोन के लिए होते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड्स हार्मोन आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड दे कैन इजीली क्रॉस द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एग्जांपल ऑफ सच हार्मोन्स आर एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा. Now we will take the mechanism of hormone action in detail. The mechanism of hormone action can be divided into two types, that are fixed membrane receptor mechanism and mobile receptor mechanism.
The first one is fixed membrane receptor mechanism. This mechanism is applies to the hormone that are proteins or amines in nature. These hormones are hydrophilic in nature and cannot diffuse across the plasma membrane. These hormones initiate their response by means of specialized receptor on the plasma membrane of target cells. While example of such hormone are adrenaline, insulin, ADH, TSH, etc. यानी जो हमारे पास फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म है वो कौन से हार्मोन्स के लिए होता है, जिनका नेचर प्रोटीन्स और अमाइंस होते हैं, ठीक है, यानी जो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. क्यों कि ये हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, जो लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका जो रिसेप्टर होता है वो टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है. दिस डायग्राम explain the mechanism of fixed membrane receptors, the various steps of which are: first of all, the protein hormones are secreted by endocrine gland into the extracellular environment, and from extracellular environment the hormone diffuses into the blood. The blood carries this hormone towards the target cell. The plasma membrane of target cell contain receptor for such hormone. So this hormone bind with the receptor present on plasma membrane to form the hormone receptor complex. This hormone receptor complex then activate an enzyme known as adenyl cyclase present in the plasma membrane. This adenyl cyclase enzyme then act on ATP to form cyclic AMP. This cyclic AMP act as second messenger inside the cell. This cyclic AMP diffuse throughout the cytoplasm of target cells and activate an inactive protein known as protein kinase into its active form, that is protein kinase. This protein kinase bring phosphorylation of specific protein in the target cells, thereby triggering the biochemical reaction which ultimately lead to the cell response. यानी इस फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में प्रोटीन हार्मोन को सिक्रीट करता है. वहां से ये प्रोटीन हार्मोन ब्लड के अंदर डिफ्यूज होके टारगेट सेल्स तक पहुंचता है, और जब ये अपने टारगेट सेल पे पहुंच जाता है तो वहां पे जैसे पहले आपको बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनका रिसेप्टर होता है, तो उस रिसेप्टर के साथ ये कंबाइन होके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसको हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज. अब ये जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है ये एटीपी के ऊपर एक्ट करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द साइक्लिक एएमपी, और यहां पे ये जो साइक्लिक एएमपी है ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है, और ये साइक्लिक एएमपी फिर एक्ट करता है ऑन द इनएक्टिवेट प्रोटीन काइनेज एंजाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म. और ये जो एक्टिव हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन काइनेज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पर्टिकुलर प्रोटीन की फास्फोराइलेशन करता है, और वो जो फास्फोराइलेटेड प्रोटीन हमारे पास है वो सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस लाता है in order to give response, that is this response may be in the form of cell secretion or contraction. The second one is mobile receptor mechanism. This mechanism is applied to steroid hormone, as these hormones are lipophilic in nature and can easily diffuse into the cytoplasm where they initiate their response by binding to the रिसेप्टर. अब हमारे पास जो सेकेंड मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, ये स्टेरॉइड हार्मोन के ऊपर अप्लाई होता है. जिस तरह हमारे पास एल्डोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि ये हार्मोन हमारे पास क्या होते हैं लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, और ये इजीली जो लिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर हो जाते हैं, और वहां पे ये क्या होते हैं अपने जो रिसेप्टर है उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं. This diagram explains the mobile receptor mechanism, the various steps of which are: first of all, just like the protein hormone, steroid hormone are secreted by endocrine gland into the extracellular environment, from where these steroid hormone are absorbed into the blood, and the blood carried them towards the target cell.
As these hormones are lipophilic in nature, so they easily cross the plasma membrane and enter into the cytoplasm. Inside the cytoplasm, they bind with the protein receptor, and by the help of this protein receptor, they enter into the nucleus of the target cell. Inside the nucleus, this steroid protein complex triggers the process of transcription of a specific gene region of DNA in order to form the messenger RNA. When the process of transcription is completed, this messenger RNA leaves the nucleus and enter into the cytoplasm. Inside the cytoplasm, it binds with the rough endoplasmic reticulum and start the process of translation, that is the synthesis of new protein. When the process of translation is completed, mean the new protein is synthesized, this new protein is involved to give response to a particular stimulus inside the cell. अब यहाँ पे हमारे पास मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, और इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो डिफ्यूज होता है ब्लड के अंदर. ब्लड उसको कैरी करके जाता है टारगेट सेल की तरफ, और जब टारगेट सेल तक ये पहुंच जाते हैं तो ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनसाइड द साइटोप्लाज्म आ जाते हैं. और साइटोप्लाज्म के अंदर ये किसके साथ कंबाइन होते हैं? प्रोटीन रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और उस प्रोटीन रिसेप्टर की मदद से ये एंटर होते हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट सेल. इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट सेल दे स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे ताकि यहाँ पे हमारे पास क्या बने? मैसेंजर आरएनए. और जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को छोड़ के यहाँ पे आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जहां पे ये क्या करेगा? न्यू प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा. और ये न्यू प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाता है, इसकी सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, तो ये क्या कर देता है? इट मीडिएट द सेल रिस्पॉन्स. This is the end of our today lecture. Stay home, stay safe. Thank you.